ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में सिर्फ 4 दिन शेष रह गए हैं। इस बीच देश भर में राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस चरण के लिए प्रचार मंगलवार को समाप्त हो जाएगा। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 91 सीटों के लिए इस चरण में वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोबारा पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करेंगे। श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कूच बिहार में भी एक रैली करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल छत्तीसगढ़ के बालोद, उड़ीसा के सुंदरगढ़ और महाराष्ट्र के नांदेड़ में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया और कांग्रेस पर नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के श्रीनगर में चुनाव रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी का पहला लक्ष्य गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करना है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर पूंजीवाद की दिशा में काम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज सहारनपुर, शामली और बिजनौर में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती सहारनपुर के देवबंद में चुनावी रैली करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा तथा तेलंगाना में लोकसभा के चुनाव कराए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तेलंगाना में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में आज वेड्डापल्ली और येल्ला रेड्डी में प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ का आज बाद में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के अनंतपुर और श्रीकालहस्ती में भी जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी आशीष कुंद्रा ने बताया कि राज्य से एकमात्र लोकसभा सीट के लिए चुनाव के लिए 117 महिला मतदान केंद्र होंगे। इन मतदान केंद्रों में सभी महिला मतदान अधिकारी और सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगी। मिजोरम में लोकसभा की एकमात्र सीट और विधानसभा की आइजोल क्षेत्र के उपचुनाव के लिए इस महीने की 11 तारीख को वोट डाले जाएंगे। श्री कुंद्रा ने आइजोल में संवाददाताओं को बताया कि पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव के मतदान में महिलाओं की अत्यधिक उपस्थिति को देखते हुए 117 महिला मतदान केंद्र बनाए गए हैं। केरल के वाम उग्रवाद प्रभावित 162 स्थानों पर 4,482 मतदान केंद्रों को संवेदनशील माना गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी टीकाराम मीणा ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि इन मतदान केंद्रों में से 817 अति संवेदनशील और 425 गड़बड़ी की आशंका वाले मतदान केंद्र हैं। पुलिस ने कोझिकोड, मल्लापुरम, कुन्नूर, वायनाड और पलक्कड़ में 162 स्थानों की वाम उग्रवाद प्रभावित के रूप में पहचान की है। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान गड़बड़ी और भ्रष्ट गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए निर्वाचन आयोग सी विजिल मोबाइल ऐप बनाई है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने लोगों से इस ऐप के इस्तेमाल की अपील की है। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी एस करुणा राजू ने सभी राजनीतिक दलों से लोकसभा चुनाव के दौरान पर्यावरण अनुकूल सामग्री का इस्तेमाल करने को कहा है। चंडीगढ़ में श्री राजू ने कहा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि वे इस विषय पर सीधे राजनीतिक दलों को निर्देश दें। उन्होंने राजनीतिक दलों से कहा कि एक बार इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक सामग्री का इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि इससे लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ता है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए आईपीएल क्रिकेट मुकाबलों में बड़ी संख्या में उपस्थित दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के अधिकारी के अनुसार मैच के दौरान लोगों को जागरूक बनाने का काम मुंबई में 3 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुए मुकाबले के दौरान किया गया। मालदीव के संसदीय चुनाव में मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी को भारी बहुमत मिला है। प्रारंभिक नतीजों के अनुसार राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के नेतृत्व वाली एमडीपी ने 87 सदस्यों की संसद में 60 से अधिक सीटें जीत ली हैं। मालदीव में 2008 में बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने के बाद पहली बार किसी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। चुनाव जीतने वाले प्रमुख नेताओं में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और जमहूरी पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम भी हैं। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कल रात मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 40 रन से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 136 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
This is All India Radio. The news read by Sanjay Mattu. Political parties across the country step up campaigning as only 4 days are left for polling in the first phase of Lok Sabha polls. Campaigning for this phase will end on Tuesday. 91 parliamentary constituencies spread over 20 states and union territories will go to the polls in this phase. These include Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Andaman and Nicobar and Lakshadweep, Telangana and Uttarakhand. Prime Minister Narendra Modi will again visit the northeast today and will address a rally at Udaipur in Gomti district of Tripura and hold another rally in Manipur. Mr. Modi will also address a public meeting in Cooch Behar in West Bengal. BJP President Amit Shah will launch the party's Sankalp Patra for New Odisha at Bhubaneswar this morning. Later, he'll address a rally at Belgaum in the state. Mr. Shah will also hold public rallies at Gadchiroli and Chandrapur in Maharashtra. Congress General Secretary Priyanka Gandhi will address public meetings at Saharanpur, Shamli and Bijnor. BSP Chief Ms. Mayawati will address a rally at Deoband in Saharanpur district of Uttar Pradesh in favour of her party candidates. The Election Commission has barred political parties, candidates and other organisations from publishing advertisements in the print media on the poll day and 1 day prior to poll day in all the election phases unless approved by it. The Commission said such advertisements in the last stage of election vitiate the entire election process. It said the affected candidates and parties do not have any opportunity of providing clarification in such cases. The Commission said to facilitate the process of pre-certification of advertisements, the Media Certification and Monitoring Committee at the state and district levels are to be immediately alerted and activated to examine and pre-certify all such advertisements received from the political parties. Punjab Chief Electoral Officer S. Karuna Raju has asked all political parties to use eco-friendly material for campaigning during the Lok Sabha election. In a statement in Chandigarh, Mr. Raju said the Ministry of Environment, Forest and Climate Change had approached the Commission with a request to direct political parties to use eco-friendly material. He asked the parties not to use single-use plastic material as it causes adverse impact on human health and environment. In Kerala, 4,482 polling stations have been identified as sensitive, of which 162 locations are considered as left-wing extremist affected ones. Chief Electoral Officer Tikaram Meena said in Thiruvananthapuram that out of 4,482 sensitive polling stations in the state, 817 are listed as critical polling stations and 425 as vulnerable polling stations. The Mizoram Chief Electoral Officer Ashish Kundra has said that there will be 117 all-women polling stations manned by women polling officials and women security staff for the lone Lok Sabha seat in the state. The Maldives Democratic Party or MDP has got overwhelming majority in the parliamentary elections held yesterday. Preliminary results showed that the party led by President Ibrahim Mohamed Soleh and former President Mohamed Nasheed have won more than 60 seats in the 87-member parliament. The party had a big celebration in capital Male, which was attended by the president and ministers from the ruling coalition. MDP had contested 85 of the 87 seats in Saturday's election, where around 78% voters exercised their franchise. This is for the first time when a single party has won a majority on its own in Parliament since multi-party democracy was established in 2008. The opposition PPM and PNC, led by former President Abdullah Yameen, has won only 5 seats, with several of their prominent candidates and former ministers losing the elections. Foreign ministers from the Group of 7 or G7 countries have called for a greater role for women in solving conflicts, saying that peace settlements with female involvement were more likely to endure. The world's 7 most developed nations, G7 ministers, at their meeting in the northern French resort of Dinard to prepare a summit meeting under the French presidency in August, also called on greater mobilization worldwide to prevent sexual and gender-based violence in conflict. In IPL cricket, Mumbai Indians beat Sunrisers Hyderabad by 40 runs in Hyderabad last night. Chasing a target of 137 runs, Hyderabad were all out for 96 in 17.4 overs. In today's encounters, Royal Challengers Bangalore will meet Delhi Capitals in Bengaluru at 4 p.m, while Rajasthan Royals face Kolkata Knight Riders in Jaipur at 8 p.m. And that is the end of this news bulletin.